Assalamualaikum everybody, this is Development Door. I'm your host. My name is Nadine Imran, and today this opportunity is given to us by our teacher, Dr. Muzaffar, who teaches us psychology. And today we are going to be talking about one of the most misunderstood disorder, which is schizophrenia. We will talk about its symptoms and causes and how people live with it. But most importantly, we will talk about how we can support those people who live with it. So today, joining me in this important conversation are my friends Sabika Fatma, Isha Batul, and Maya Numan. Thanks for having me again. I would like to say that schizophrenia is such an important topic to discuss on, as it affects many people's life and their relationship and their surrounding. So basically, schizophrenia के साथ बहुत stigmas attached है, especially in our society. Okay, and इसके काफ़ी symptoms हैं जो हम hopefully हम इस podcast में properly इसको discuss करेंगे. I agree, Sabika. A lot of people have misconceptions about schizophrenia, and now it's time that we clear those up. It's not about being mad or dangerous. It's a complex disorder that requires or deserves a compassion and understanding. I agree. And one more thing that I would like to add would be that we need to talk very openly about all of these things. Because even if I have seen every morning show or any talk show where they are really talking about all these things, they're talking about it in very shaded terms. They won't openly say that this is a mental illness. So I think for us to have a deeper understanding of this, we need to go for its causes, go for its symptom, and most importantly see the stigmas that are attached to it, because I feel stigmas are like the most prevalent thing जो हमारे यहाँ society. Exactly. Well said, Isha. So now let's start with the basics. So, Vika, what do you think are the core symptoms that cause schizophrenia? First, let me define what is schizophrenia is. Schizophrenia is actually a chronic disorder. What I mean by chronic is that it's a phase that stays for basically 6 months. Okay. Schizophrenia is a chronic mental health condition that affects people's cognitive thinking, their emotions, their feelings, and their relationships as well. Okay, so basically, schizophrenia की 3 symptoms होते हैं. Okay, the broad symptom is the positive symptom, in which there is hallucinations and delusions. Okay, delusion is basically a false belief. जो patients होते हैं उनको लगता है कि वो है, लेकिन वो असल में होता नहीं है. We all know what hallucinations is. It's basically visual and auditory hallucination. दोनों patients को feel होते हैं. अब hallucination visual में क्या होता है कि visual में they feel कि that there is someone who's trying to attack or who's trying to plot some kind of negative feelings on them. Apart from this visual hallucination, इसमें we see कि they can hear someone जो real में नहीं होता है, but in their unconscious mind they feel there is someone who is continuously trying to intimate or trying to instigate about something which we should not do it. They should not do it. Okay, so ये होता है. और secondly हमारे पास होता है positive negative symptoms. उसमें depression और इसका symptoms same होते हैं, लेकिन बस फर्क ये होता है कि डिप्रेशन में आपको जैसे लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, क्योंकि पेशेंट्स को होता है कि दे आर नॉट they have no value in their lives anymore, and they feel disconnection among their family members as well, or social gathering में भी. तो इसमें भी schizophrenia के केस में भी हम ये देखते हैं कि पेशेंट्स को सेम सिम्टम्स और फील होते हैं, सेम सिम्टम्स में नजर आ रहे होते हैं, और साथ साथ उनको कॉग्निटिव सिम्टम्स भी नजर आ रहे होते हैं. दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जो कि डिफरेंशिएट करते हैं डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में. इसमें इनएबिलिटी टू थिंक होता है, आप पेशेंट्स फोकस नहीं कर पाते कि व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स नॉट रियल, और ये जो व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स नॉट रियल की जो थ्योरी होती है उनके माइंड में, वो उनकी लाइफ में और ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. So also can I just add something? I'm really sorry. So I think एक और ये चीज़ होती है कि हम लोग को कुछ पेशेंट्स को इंसाइट होता है, लाइक दे नो कि जो वो देख रहे हैं वो असल में है नहीं, एंड कुछ लोग को सच में इंसाइट होता भी नहीं, लाइक दे हैव नो आइडिया कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है. That's a great breakdown, but schizophrenia just doesn't come out of nowhere, right? So I know that there is a lot of research to be done, but
Like, what do we got so far? Okay, what causes it? Yes, so basically the causes of schizophrenia are not fully understood, but scientists have identified several key factors that may contribute to the disorder of schizophrenia. सही है. इसमें अब हमारे पास आ जाता है genetics, biological and environmental. सही है. Genetics में we have, if for example एक बंदा ऐसा ही है, उसके अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स या सिबलिंग्स, अगर उनको स्किज़ोफ्रेनिया है, सो दे हैव चांसेस ऑफ डेवलपिंग दैट एज वेल. सही है. अब एक ट्विन स्टडी हुई थी. सही है. उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया था कि 40 to 50% अगर एक ट्विन को स्किज़ोफ्रेनिया है ना, तो 40 to 50% ऑफ परसेंट चांसेस हैं कि दूसरे ट्विन को भी हो. सही है. उसके बाद हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाता है कि जो है इट इज एविडेंस है कि हमारे जो ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, सो ये उन लोगों में कम होता है जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है. सही है. एक्चुअली मेक्स सेंस बिकॉज़ एज आई सेड इट्स लैक ऑफ मोटिवेशन जिसमें होती है. तो इट मेक्स सेंस कि जहाँ डोपामाइन नहीं होगा, द पर्सन माइट फील द लैक ऑफ मोटिवेशन. बिल्कुल बिल्कुल. अब हमारे ब्रेन में एक पार्ट है PFC. सही है. या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. एग्जैक्टली. हाँ. तो वो स्किज़ोफ्रेनिया जिसको होता है ना, उसमें वो अंडर एक्टिव रहता है, एंड वो उसका काम ये होता है कि वो मेमोरी से रिलेटेड काम करता है और डिसीजन मेकिंग से करता है. सो जो स्किज़ोफ्रेनिया जिसको होता है ना, दैट्स वेरी अंडर एक्टिव इन देम. सही है. उसके बाद सो बेसिकली फिर हमारे पास आ जाता है एनवायरमेंटल. सही है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाता है. उसमें जो है हमारे सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है. अगर हमारे से कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है, या कोई ड्रग यूज का कोई कर रहा है, या फिर प्रेगनेंसी के वक्त कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो वो ये सब ना स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रिगर करता है. सही है. तो बेसिकली इट्स जस्ट नॉट वन थिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स. Also, adding into the genetics thing, we need to understand that this is exactly the reason what makes schizophrenia one of the most complex mental illnesses. Because it is genetically predisposed. Right. And until and unless there is no substance abuse or there is no significant stress, a lot of times it cannot be triggered. And for that we need to understand कि I think उसमें हमारे खुद भी एक ये रोल होता है कि हम चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं. We need to understand कि if someone is at risk, तो as a person we should understand कि ठीक है, I should avoid certain types of drugs and everything. And I think इसमें इंटरवेंशन का भी पार्ट होता है जो बहुत important रोल प्ले करता है. If I tell you what is intervention, what is prevention? Prevention basically, जैसे Maria has told about the genetic factor. So if a family has a history of schizophrenia, उनके पास उनके किसी फैमिली मेंबर में, फॉर एग्जांपल दादा या दादी को हुआ है schizophrenia, उनकी हिस्ट्री है, तो the family needs to create such environment for their children and for themselves as well, जहाँ पे they allow कि इस बारे में बात हो सके. सही है. ओपनली बात हो सके. ठीक है. if they find any sort of symptoms, negative symptoms जैसे मैंने बताया, I mean positive symptoms भी उसको दिख रहा है कि कुछ ऐसी बात है, so वहाँ they have to act up and they need to make environment जहाँ they can freely talk about it and they can try to prevent जो future में long cause कर सके. That was very insightful. So now let's talk about what are the challenges of people who live with schizophrenia. It's so tough because schizophrenia affect every part of a person's life. How they feel, how they think, and how they interact with others. For example, एक बंदा है, उसको auditory hallucination हो रही है, so उसको आवाजें आ रही हैं which only he can hear, and उसको आवाजें कुछ करने को कह रही हैं which only he or she can hear. So it just hinders with their performance as well, and it's very distressing as well. सही है. और फिर जो है delusion, it's another challenge for someone. सही है. उनको जैसे कि सबिका has already mentioned as well कि लगता है कि कोई बंदा आपको अटैक कर रहा है, या उनके पास कोई पर्सनल कोई एबिलिटीज हैं, कुछ स्किल्स हैं करने को. तो ये सारी चीज़ें जब एक बंदे के साथ होती हैं, they cannot even tell कि what's real and what's not real. So this basically hinders with their overall performance. They cannot maintain relationships, neither they can do jobs properly. So it's very tough for them to Also, taking from what Maria said, I remember this personal experience that I had. So someone from my family, he was diagnosed with schizophrenia, and often he would describe that he was living in like two worlds. There was this one reality world when he was every day, but then there was this other world which he was stuck in and he couldn't get out of.
Exactly. Right. And the thing is that because of this, a lot of people will tend to like isolate because he did that, and because of that, it was only like worsening his symptoms. He wouldn't come out of the room, and so this whole thing, that social withdrawal, it is very common in our society Right. as well. So this social withdrawal just, it just hinders, even if someone is going for therapy and they miss their sessions, it's obviously going to hinder to, how Yeah. he's going to go about it in the future. It really does sound exhausting, both mentally and physically. So now we'll talk about what do you guys think are some ways in which people who live with schizophrenia can manage their symptoms? Like, Isha, what do you think is the role of therapy in this? Yes, in my opinion, therapy plays a very significant role in schizophrenia, and basically it is a lifelong disease. Yeah. So it cannot be like we cannot eliminate it pura. But the thing is that we can obviously manage it. So first thing that I feel most of every like psychologist would go for would be CBT, which is cognitive behavioral therapy. Yeah. It's gonna help the person, like the patient who is diagnosed with it, really like how उनके जो thoughts बहुत distorted thoughts होते हैं, CBT is gonna help them with that. Right. Secondly, जो मैंने एक बात की थी about the social withdrawal, CBT would help them manage that as well. Thirdly, आपकी emotional regulation आ जाती है, because obviously जो आपके एक bad thoughts आ रहे होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके emotions का part होता है. And secondly, जो एक और बड़ा factor होता है, that is family therapy. फैमिली थेरेपी में हम लोग ये करते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोग सिर्फ एक पेशेंट को तो नहीं टारगेट कर रहे होंगे ना उस चीज़ में, वी वुड गो फॉर कि जो उनके सराउंडिंग के लोग हैं जो उनको बेसिकली सपोर्ट कर सकते हैं, जो उनके साथ एवरीडे लाइफ में होते हैं, उनको हम वो ऐसे इमोशनल टूल्स प्रोवाइड कर दें कि वो उस इंसान की हेल्प कर सकें. और सेकेंडली, जब एक बंदा खुद अपने एक लव्ड वन को देखता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है दैट इट्स नॉट देम, तो some people really tend to feel that stress. They would feel depressed as well, that why is this person going through this. So of course family therapy आपको उसमें भी help करेगी. Right. I think Isha is right about therapies, but medications भी काफ़ी इसमें important role play करती हैं. Antipsychotics जैसे हैं, और इसमें हमारे पास काफ़ी टाइप की medicines आती हैं, जैसे कोलोजापिन मेडिसिन है जो हमारे डोपामिन लेवल को बैलेंस करता है और मेक श्योर करता है कि जब व्हेन वी फील लो तो वी गेट द मिनिमम लेवल और इट इज अ बैलेंस लेवल ऑफ डोपामिन इन आवर ब्रेन सिस्टम, इन आवर कॉग्निटिव सिस्टम. सो मीनवाइल थेरेपीज भी हो रही हैं. अगर बंदा मेडिकेशन भी ले रहा है तो देयर इज हाई चांसेस कि वो एक स्टेबल लाइफ ले सके. देखो हम साइकोलॉजिस्ट ये नहीं कहते हैं कि इसके लैप्सेस नहीं होंगे, स्किज़ोफ्रेनिया के कभी लैप्सेस नहीं होंगे, एपिसोड्स आएंगे, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि इफ अ इंडिविजुअल, इफ अ पेशेंट इज टेकिंग देयर मेडिकेशन एंड डूइंग थेरेपी properly as a responsible human being, then there is higher chances कि वो चीज़ काफ़ी stable हो सके और काफ़ी control हो सके. As Vika has mentioned, medications like atypical psychotic drugs can help in managing symptoms of schizophrenia, but finding the right amount of medications can be very very hard, and you have to go through a lot to find the right amount. And also जो है जो side effects होते हैं फिर उसके बाद, they are also very hard to manage. सही है. So अच्छा, medication, so you have to closely monitor and adjust and ask your therapist कि कैसा कौन सी लेनी है, क्या करना है. And also फिर उसके बाद apart from medications there's we can also अच्छा, अब medications के बाद keeping in mind the holistic approaches, सही है ना, उसमें which basically includes medication हो गया, support from loved ones हो गया और therapy हो गई. सही है. इन सब का जब एक वो बनता है ना combination, तो वो फिर it helps the person with schizophrenia. And I think it makes sense क्योंकि एक चीज कभी भी schizophrenia के केस में काम नहीं आएगी. Exactly. हर चीज पैरेलल चल रही होगी, interplay relationships, social gatherings. Sorry, I'm cutting you off. जैसे कि causes of schizophrenia में भी आपका एक cause नहीं है, there are like multiple causes. सही है. उसके बाद इसी तरह से उसकी जो cure का होगा, that also depends on multiple things and not just one. That's such a very well-rounded approach.
But there is another problem, societal stigma. Isha, I think it is relevant in every part of the world, including Pakistan. So, how do you think stigma affects people, and how can they combat it? Yeah, so basically, if someone takes my opinion about it, I feel that it is such a funny thing when we talk about the first stigma that is very, like, prevalent in our, Pakistani culture, is the stigma of like किसी के ऊपर काला जादू हुआ हुआ है, किसी के ऊपर जिन्नात आए हुए हैं, which is like, if you think about it, the spiritual healers that we take our patients to, उनकी आपने खुद मार्केटिंग देखी है, वो कहाँ होती है, लिटरली दीवारों पे मार्केटिंग हो रही है. हाउ डू यू फील दे गोना लाइक गो फॉर लाइक an approach जहाँ पे एक बंदा जो है वो सही हो जाए. And the thing is that yes, a spirituality really matters in a person's life, but it shouldn't be the only basis that we base it on कि ऐसे ही हम लोग एक चीज को ट्रीट करेंगे. अगर हम किसी को थेरेपी में नहीं लेके जाते हैं या हम उसको प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं देते हैं, इट इज जस्ट गोइंग टू डिले एंड इट इज जस्ट गोइंग टू वर्सन व्हाट अ पर्सन इज फीलिंग. आप उनको बाबा के पास ले जाएं, आप कुछ भी कर लें, वो चीज आपकी नहीं सही होगी until and unless there is like how Maya talk about a holistic approach कि बहुत सारी चीजें का आपका जो broad concept होता है वो होना चाहिए. Second stigma that's attached is basically that how our families they themselves feel very embarrassed about it. If there's someone in their household जिसको like they see कि okay this person is not acting normal, they're going to feel कि अच्छा ठीक है we're embarrassed, या फिर वो उनको बहुत ज़्यादा derogatory term से बोलें कि तुम पागल हो गए हो, या फिर तुम्हारे साथ दिमागी कोई मसला हो गया, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स अगेन फिर आपकी वही सोशल विड्रॉल वाली बात आ जाती है. द पर्सन इज गोना फील वेरी बैड अबाउट इट, दे आर गोइंग टू विड्रॉ फ्रॉम देयर फैमिली. एंड फैमिली इज आई फील द फर्स्ट हैंड पीपल जिनको उनको सपोर्ट करना चाहिए. तो अब सोशल विड्रॉल आ गया, हमारे पास ये स्पिरिचुअल हीलर्स का कॉन्सेप्ट आ गया. ये दो स्टिग्मास हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है. वी रियली नीड टू लाइक एड्रेस देम. स्टिग्मास के अलावा भी आई थिंक अवेयरनेस पाकिस्तान में बहुत इसकी कमी है. एग्जैक्टली क्योंकि वर्ल्ड वाइड तो फिर भी अब स्किज़ोफ्रेनिया को समझा जा रहा है, इस पर रिसर्च की जा रही है. साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि स्किज़ोफ्रेनिया कैन बी हील्ड प्रॉपर्ली, बट पाकिस्तान में इस चीज़ को इतना नहीं समझा जाता. और जो डिप्रेशन की बात जहाँ तक वो टैबू बनी हुई है, तो स्किज़ोफ्रेनिया तो उसका एक अपर केस है. तो आई थिंक अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट में इस चीज़ के लिए. Yeah, that's exactly why raising awareness is so crucial. We should break the barriers of misunderstanding, and we should and individuals with schizophrenia हम उनको एक बहुत comforting environment देना चाहिए जहाँ पे वो supported feel करें and not feared. सही है ना? तो I feel like हमें जो schizophrenia का जो mental health जो care है हमें schools में, colleges में and workplace में इनको incorporate ज़रूर करना चाहिए, so that it promotes inclusivity, community, and everyone feels safe around and supported. And not feared. Yeah, I couldn't agree more. So now let's wrap up today's conversation on what do you guys think you would say to someone who is supporting their loved ones who has schizophrenia. I would say that people who have loved ones who are going through schizophrenia, they need to understand that this is a illness that cannot be healed 100%. Right. It can be managed, but with the right support, with the right therapeutic interventions, with the right medications, of course, it can be managed. And the person who has schizophrenia doesn't mean that they have lost their mind completely. Right. They can still live a fulfilling life. Secondly, we need to understand that we need to celebrate even the littlest of achievements in our life. I think this is a very general thing. Everyone should do that, but especially for the people who go through schizophrenia, even if they were isolated for like 20 hours, and now that they're trying to get out of their room, and now they're isolated for like 15 hours, they shouldn't be like, oh, pehle tum ye kar dete. It should be more like, no, you did amazing, there's progress. It's going to help the person feel very they would feel celebrated, and they would be motivated towards ताकि वो अपने आप को बेहतर कर सकें. And apart from this, I guess regular checkups होने चाहिए. Okay, the person in your family who's facing such kind of disorder, apart from therapies, apart from being there for them, make sure कि regular checkups हो, make sure कि उनकी medication properly हो रही हो, because
as I spoke earlier कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, थेरेपीज एंड मेडिकेशन. सो इस चीज़ का भी काफ़ी ख्याल होना चाहिए लोगों को. Yeah. And to add to that, I would say कि reach out to therapist हो गया, doctor हो गया, अपने loved one, support group होता है, आप reach out करें जितना जल्दी. I feel like you'll reach out and seek help. That would be better for you. Mental health has come a long way, and I feel like you don't have to go through this all alone. अब इतनी सारी facilities आ गई हैं. You can even check your symptoms online. NGOs काफ़ी हैं इस NGOs बारे में. काफ़ी हैं, exactly. So I feel like you're not alone in this. Exactly. We need to understand that कोई भी आपकी mental illness हो, the person is not alone. Yeah, There are exactly. people who went through that, and alhamdulillah, they're better. Yeah. Yeah. So thank you, Sabika, Isha, and Maria for coming here today and sharing your thoughts on schizophrenia. So what we learned is that schizophrenia, कैसे we can help the people who have schizophrenia with the right treatment and medications, or they can live a fulfilling life like all of us. And if you have any feedbacks, you can write it on zebfm.org, and if you don't have enough time, you can also comment, and stay tuned to Zeb FM.